Hi guys, Assalamu alaikum to everyone. This is Amna Hussain back with another live streaming in front of you. I hope you guys are doing amazing with your loved ones and family. And if I take it as an Urdu, so the point I'm trying to make over here or to tell you is that उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं जहाँ पर भी हैं अपने प्यारों के साथ. I hope you got it. So the thing is today I want something different, and it's been a while. I was not doing live streaming, and I was busy in my personal and professional commitments. And उस process को enjoy basically करेंगे because ये बहुत important होता है. I think whatsoever you are doing in your life and आपके career में आप उस process को actually enjoy कर रहे हैं. वो burden ना हो आपके लिए, enjoy आप कर रहे हो, उसमें से एक fun extraction भी चल रही हो, and at the same time आप achieve भी कर रहे हो. So yeah, that was something really going on. So I thought to come up live and do some streaming and talk to you guys and just let me know कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं, कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, खैरियत से हैं. And the topic I would be discussing with my guest, and I must say a special guest today. She is my school friend, very dear friend of mine. She would be joining me, and the topic we would be discussing is again all about life and career, the balance element in life and career, how it goes by, and how the roller coaster is basically how it goes. So we would be discussing that together. And I want to listen from you all that what type of life experience you want to share with us so that it would be a learning for us also as well. And at the same time, what type of challenges you are facing in career. So just leave me in the comments. I would be happy to address in this experiment. And maybe due to the time limitation, if I won't be able to do that, so I will reach you out and we can catch it from there. Yeah. Okay. So yeah, she's there now and waiting for me to call her in, and I'm excited too at the same time. So let's welcome Abiha, my friend. How are you doing? क्या हाल Hi, है? Assalamualaikum. I'm very well. How are you, Amna? अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ. Good to see you. Lovely to Good to have see you. you. Amazing, honestly. Exactly. And it's been a while, like we were discussing कि वो कब करना है, कब ये chit chat हम करें I related know. to our theme. And it was so crazy, right? Things are so uncertain. Things are so busy and messed up all the time. कुछ ना कुछ चल रहा होता है every time. It's very difficult to crack a schedule which you can follow. Yeah, And gladly, the best thing we do today is that बस कहा कि नहीं अब करना है. जब ठान लेता है इंसान तो फिर you have to just get it done. exactly. And That is the key. We would be, talking and knowing the tips from you later in our chit chat जो भी आज हम, carry करेंगे. So, yeah. all right. So, let's start, Abiha. I know half of your life, you know, and Yeah. now just let us know about like your early life, maybe, the days with your family as a child, Hmm. as a young Abiha. Who was she? So, yeah, feel free to share with us. Okay. So if we take it from the very beginning phase, I'll just keep it relevant to our audience, whoever is listening to us, and I would like to keep my conversation as relevant as possible for me. Okay. Um, Yeah, Initial days were super simple. Um, Typical school, घर से school, weekends with cousin, nana nani, dada dadi. Very typical beginning, जो कि majority of our kids around us have been through. And yeah, that's the stage where you're not very serious in life. You're playing around. You're having a very nice school routine. 2 बजे घर जाना है, फिर chilling करनी है, games देखने हैं, TV पे cartoons देखने हैं and all that. A very you know set एक हमारा schedule होता था. hmm, And वही पढ़ाई was like on the top के यार A plus मारना है, nothing less than that. And 80% से नीचे तो oh my god you're a failure. yeah, इस तरह की चीजें, तो वो सब माइंडसेट हम सब लोगों का है. And I'm like over right now I'm trying to depict my generation, my surroundings also, not just my own self.
that most of us have been through this childhood कि यार A मारना है and इसमें top करना है उसमें top करना है, which is definitely worthwhile. It's definitely very very important. It has its own worth. Mm-hmm. But certainly, as you grow, as you learn about life, as your mind starts to expand and start learning new things, you get to know that there are a lot of other different things in life that you're missing out on if you just keep focusing on A's and B's. Yeah, So yeah. वो बाद में जाके फिर थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस आई थी. शुरू में तो बस बिल्कुल एक स्टैटिक लाइफ चल रही थी. But as and when I moved forward in life, things started to open up, and I started to open up with them also. Yeah, yeah. Okay, and then how about, like you did school time or early days we were discussing. Now, when we were like, in the peak time of our school, jahan hamari mulaqat thi, when we met, Oh we had yes. a very good friendship. We had a very amazing time. Guys, this is all for, the special moment I'm talking about. So, wo Yeah. kis tarah se, okay, if I ask you, okay, what was the one thing we did something in school and that was a lesson for you? वो स्कूल की कोई Okay. अगर शरारत ले लें या फन मोमेंट्स ले लें उसमें से हमने लर्न क्या किया है? शैतानियों के जो भी moments थे, the experiments we used to do with teachers, with students, and the emotional जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं यार दोस्त के साथ रहना है और एक best friend बन जाती है उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, all those silly things that we did, um, part and parcel of the game, and that just all comes to me, in form of a memory that यार ये भी मैंने ही गुजारा है, this was also me. The person I am today is definitely different, well grown, whatnot, but those things have their own charm, and उनकी जो golden moments हैं, that will probably not be changing. Incidents जहाँ तक you're asking about, so there are so many incidents. I remember running backstage, theater हो रहा था हमारा जो school में, we used to have that huge crown on the Yeah. back side, and then a stage was there, helping each other, getting ready, for the play. Or eventually, I helped my best friend. This is another day when there was a debate competition happening, and she was all crying that I can't do it, and I was all there. No, you can do it, and मतलब मुझे खुद पता नहीं था इस बारे में कि वो क्या debate कर रही है. But बस still वो support किया those, था. yeah, yeah. नहीं तुम नहीं रोगी, you will not cry, and you know we are there, सब कुछ सही होगा, ये लो अपनी तुम, have this drink, have this chips and biscuits, just stay pumped up. And I was pumping her for God knows what reason. मुझे खुद भी आज तक वो debate का मतलब ही नहीं पता, इतनी कोई गाड़ी उर्दू की debate थी वो. I still Yeah. can't figure out वो क्या topic था, but she was really good at Urdu, and she still is. Or eventually she won the first prize also. So I remember myself getting up from the audience and running towards the stage just to hug her and congratulate her. Those minor emotions, or those innocent kind of things we used to experience, they were pure, they were meaningful, and And they were beautiful. exactly. And And right having now, spent classes छोड़ के दूसरे क्लास में, मैं तो हमेशा अपनी क्लास छोड़ के तुम्हारी क्लास में आ जाती थी, तुम्हें याद होगा. exactly. मैं यही याद My करने class वाली थी. was boring, full of studious and बिल्कुल nerds. खैर मैं उनकी यही अपनी बात करने importance वाली है. थी. And I used to sit in your class more, and I had friends more in your class. All the Exactly. girls. अब मैं अपना नाम लेना शुरू कर दूंगी तो मजा आ जाएगा हमको. Exactly. I mean, like, मेरे mind में भी यही बात आ रही थी that you were the science student and the Hmm. most serious and the most, that kind of student, like ये science की student है. हम लोग तो commerce के हैं. नहीं, I was Yeah. never that But student. हम तो fun करते हैं and all that. And I remember that time, अब वो बाद में पता चला कि क्या क्या स्किल्स मेरे अंदर हैं, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर हैं, वो फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन वी एक्सप्लोर इट. सो लाइक अगेन वो हमारी एक बेस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्रॉम स्कूल है. सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट टुडे कि लाइक जो स्कूल टाइम में जो भी हम वो जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उससे हम बहुत कुछ अगेन लर्न कर रहे होते बिल्कुल हैं. ऐसा है. लिटरली आई वॉज अ पर्सन, कभी कभार मैं अपने आप को अंडरस्टिमेट भी करती हूँ यार, ये जो साइंस स्टूडेंट्स है ना ये बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है. मैं तो नहीं हूँ. ऐसा मैं तो नहीं. मैं तो This नहीं. is just a And myth. by the time we realize the thing कि वो जो अंडरस्टिमेशन है वो बहुत रॉन्ग होती है at the school time, and but still और फिर it happens. एनवायरनमेंट जो होता है ना, फिर क्रिएट हुआ हुआ होता है. इसमें तुम्हारी या मेरी गलती नहीं है आमना. द एनवायरनमेंट दैट वी वर इन, ठीक है, वी वर सराउंडेड बाय पीपल जो इंपॉर्टेंस देते थे साइंस को सिर्फ. Yeah, एंड मतलब ये सब वो एनवायरनमेंट था, वो वक्त ही था, इन इन exactly. इन इन एक्चुअलिटी उसकी वो इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं जो हमने उस टाइम सोच के बना ली थी, बिकॉज वी वर टाइनी माइंड्स जो देख रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल exactly.
Okay, so let's have some look at the comments. कौन कौन हमारे साथ है, कौन join कर रहा है? So we have Sheikh Hassan. He's saying, "Hi Amna, good to see you with a very interesting and important topic, which is again balancing your life and career." We would be talking it further. Uh, okay, so my mother is also watching. She's saying, "Yes, we are with you." Okay, means she's watching. Hi, Auntie. Assalamualaikum. So nice of her. Exactly. She's Oh, saying, "Abiha, mashallah, good to see you after a long time. बहुत खुशी हो रही है likewise, हमें Auntie. Honestly, I feel good too. I should reply you Yeah, personally separately. yeah, for sure. Of course, you will. Okay, and then Ahmad is there. He's saying great work, Amna, as usual. Thank you so much, Ahmad, for joining and being here. Okay. अच्छा अम्मी ये भी कह रही हैं दैट आमना की तरह अभिया भी कॉन्फिडेंट है Sweet. ये हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे रही हो at this No, time. she's doing what a great mom should do always. Exactly. All right, so fun and this is so loving to hear from you all. All right, thank you very much for joining in. All right, so let's move on to a point like एक हमने school time discuss किया, early days discuss किए. अब जब after college when you thought about again your higher studies, so what was the I mean like made you to choose marketing as your major? Because I know you picked a marketing and masters in marketing. So क्या वो क्या था like within you और कोई सोच थी या कोई influence था marketing as a subject को आगे आप carry forward करो ये क्या था? What was it? Okay. Why you So chose marketing as a subject? from the start, always, like very other, like a lot of other girls of my age at that point in time, I was very much into art, अच्छा, creativity, design, colors, just art always. स्कूल खैर हमारे स्कूल लेवल में इतना आर्ट को उस टाइम पे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी. आर्ट वाज जस्ट अ वंस अ वीक वाला सब्जेक्ट. एक आधे हाँ घंटे right. का सब्जेक्ट होता था आर्ट, दैट्स इट. उसको उस हद तक की इम्पोर्टेंस मिलती थी. I'm sure other schools must have had greater room for learning in that perspective. Right. And I'm glad, really happy to see कि अब जाके like the time we're standing in right now today, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे niece and nephews हैं, we see बहन भाई के बच्चे, they all are having art का उनका पूरा एक subject है proper. They're Yeah. taking them from the scratch. They know much more about architectures and design versus when we were of that age. Hmm. Exposure का बहुत बड़ा factor है, and obviously the opportunities they're getting are much more than what we used to have. Right. Um, so हमेशा से ना ये art was my drive. I was inclined towards it. So initially, the young student who came out of Habib Girls School, she wanted to be a fashion designer. And अच्छा okay. like so many girls around me, I'm sure the people are watching right now, and हमारी जो और भी age की लड़कियां हैं, most of them, they are all always interested in, yeah, fashion designing, clothing, fashion art, makeup, cosmetics. This is Yeah. हमारा weak point है ये सब. मतलब हमें अच्छा लगता है, we like dressing up, we like dressing people up. This is by nature, for majority, not for all maybe. Hmm. So that was my idea कि यार my direction, that fashion designing करनी है. And Hmm. जो मेरी बड़ी बहन है, she used to do my consultancy with regards to subjects and schools and अच्छा. colleges, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. So she knocked some sense into me that uh, do something that at that point in time will help you 5-10 years down the lane. ठीक है, Hmm. अभी तुम फैशन में जाती हो तो यू विल डेफिनेटली नीडिंग सम इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सम इयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग. उसके बाद तुम्हें वो पे ऑफ होना शुरू होगा. सो माइट एज वेल गो विद other options, like consider other options in which Right. maybe in a shorter period of time you're able to get there more. Hmm. And it's always important, to matlab, one way or the other, you should be having a degree, a qualification. So usko apni jagah pe rakho, theek hai, pursue your interests, pursue your area of jahan tumhe interest hai, jahan tumhe jana hai. But at the same time, do make sure that you have a particular qualification also at the back end, just so that in future 5-10 down the lane, you're at least somewhere to go to. You have options and you're more secure than So you will इसमें be.
यहाँ पर एक आई थिंक एक प्लस पॉइंट ये रहा विद यू दैट यू गॉट अ गुड गाइड at a very correct, I think, time. Like you were telling about your sister that she was guiding you, she was mentoring you. So again, for all the graduates also, it's very important, to have a good guide Yeah. in their like career journey, to Hmm. understand कहाँ जाना है, क्या करना है, and there are tons of things ahead. Okay, so if I ask you about like again first job start की into marketing, right? पहले तुम्हारी एडवाइस वाली बात में दो पॉइंट्स बोल दूं दैट व्हेन समवन Sure. गिविंग यू एडवाइस तो बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि यार दे आर Hmm. टेलिंग समथिंग डिफरेंट आई वांट एबीसी दे टेलिंग मी टू डू एक्स वाई जी Hmm. so it's always not really good to listen to but that that dislike factor can actually help you later on so Exactly. keep your ears open just listen to everything listen to everybody around you people are some give good advice some give really bad advices Hmm. True. सुनो सबकी Absolutely. करो अपनी हाँ. um, इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग दैट कीप योरसेल्फ ओपन हाँ. ठीक Right. है This is very important. गेट कॉन्टैक्ट मेक कॉन्टैक्ट सिबलिंग्स नहीं है कजन्स नहीं है फ्रेंड्स कोई ना कोई कीप पीपल विद यू जिसके आप Hmm. एक्सप्रेस कर सको अपना कोई कंसर्न्स दैट दे कैन एडवाइस यू बैक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट Right. द टू वे कम्युनिकेशन एंड दिस गोज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यू नीड टू be able to express in order to learn हाँ. more about yourself. Exactly. This is Yeah. very important. Very, yeah. Absolutely right there. So So your yeah, question, I was just my yeah, first. yeah, I was just again asking about your career. You started your first job in a marketing firm. You did your marketing projects. So to date, how is your career? And are you open for any leading opportunities in your career right now? So that again, uh, whoever people are watching us, and they will watch us, so definitely they can reach you out for any projects for collaboration. So anything you want to just explain about it, so feel free. Before you answer, I just want to thank you to our participants who are there with us, and I will take your comments in a moment after once we finish this question. Yeah, so stay tuned, guys. Thank you very much. Yeah, Abhiya. Okay, great. Thank you for that, Amna. Okay, when talking about the career part, सबका concern है, especially from the last 1 year. Everybody has a different set of struggles. Everybody is going through a rough part. सबकी अपनी अपनी struggle चल रही है from top to bottom. Talk about Mhm. people around us. कितना ही Right. senior है, कितना ही junior है. Everybody has their own things to work out. Um, करियर कभी भी ऐसा स्मूथ नहीं होता इट्स नेवर लाइक दिस देयर ऑलवेज बी डिप्स देयर ऑलवेज बी अप्स एंड स्टैग्नेंट नहीं हो सकता होगा Yeah. बट उसके लिए विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट wait, be patient, be strong enough to get through that rough phase. Mhm. Everybody has their own ups and downs. I've had my own too. I started off from a very basic internship at a bank. Then I went to another bank. Then I started at an advertising agency. ओके एड एजेंसी में मेरा इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ माय बैचलर का एंड चल रहा था वहीं पे पैदा हो गया था उसमें Okay. इन्फ्लुएंस थे मेरे फैकल्टी Acha. that person introduced me into this whole ball game advertising agency में क्या क्या होते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं क्या क्या रोज होते हैं अब वही ना यहाँ पे लिंक हो रहा है मेरा आर्ट का शौक my interest in design creativity art and advertising so Yeah. I was lined up and then I met the opportunity so that's how luck comes into play you need to prep yourself up in order to meet an opportunity ताकि आपकी लगना Hmm. शुरू कर दे सो मेरी फैकल्टी थे उन्होंने मुझे अपने लेक्चर से इन्फ्लुएंस किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब Mhm. उस टाइम कुछ पता नहीं था सिर्फ ये पता था दैट एडवर्टाइजिंग एड्स बन रहे हैं मजा आएगा क्रिएटिविटी माइंड से सोचेंगे एंड एड्स बनाएंगे टीवीसीज एंड मॉडल्स एंड व्हाट नॉट वो वहाँ अभी से वही नजर आ रहा था द ग्लिटर एंड ग्लोरी उसके आगे कुछ पता नहीं था Hmm. बट फर्स्ट जॉब में ही रियलाइज हो गया था दैट नथिंग इज पीस ऑफ केक एंड सबको अपनी अपनी स्ट्रगल करनी है हर लेवल पे करनी है then second job was a little deviation from advertising वहाँ पे I learned about e-commerce and our Hmm. top e-commerce of the country उनके साथ काम किया
वहाँ के अलग बॉल गेम था, उधर सब कुछ वॉज रोलर कोस्टर. एवरी डे Hmm. वॉज अ न्यू चैलेंज. एवरी डे वॉज किया, कल जो किया था ना शेड्यूल, कल जो टास्क किया था उसको भूल जाओ, आज के नया ये पकड़ो. So Yes. every day was, every morning there was something new. So I call that period a roller coaster. Um, Right. कुछ भी पता नहीं था नेक्स्ट क्या होने वाला है. It was just so uncertain. Mm-hmm. um, within 1 year I felt that यार मैंने बहुत कुछ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि वो एक चीज कभी खत शुरू होती थी बट एंड नहीं होती थी. उस जॉब का ये सिनेरियो था कि चीजें बहुत फास्ट होने की वजह से चीजें इनकम्प्लीट छूट छूट रही थी, द टास्क. तो वहां पे बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही आई रैप्ड अप फ्रॉम दैट कंपनी. Then I took some break, and then I landed my other major job that has played the major role in my career development so far, and जिसने मुझे सबसे ज़्यादा learning दी है, exposure दिया है, with working with top MNCs, top pharmaceuticals, top people in Pakistan, and not only in Pakistan but abroad also, in Egypt, in Turkey. I was also sent to Egypt for a couple of days to attend meetings, to you know to share our performance analysis कि हमारी company कैसे कर रही है. And my company sent me to Egypt also. Wow, that's nice. Mm-hmm. उन्होंने That's chose me to go and okay. represent the company on behalf of myself. So the you know the journey is never, it is planned. I'm a very planned person. I remember कि मैं जो येलो वाले हमारे पोस्ट-इट्स होते हैं वो लेके बैठी थी, इंटर में थी मैं. एंड मैं ठीक है 2008 में ये होना चाहिए मेरे साथ, में ये होनी अच्छा. चाहिए, 2010 में मेरे पास घर होना चाहिए, 2015 में मेरे पास ये होना चाहिए. तो आई एम अ वेरी प्लान्ड पर्सन, बट माय प्लान्स, like not always your plans can be super realistic, no? Yeah, yeah, But definitely. planning really helps to chase where I wanted to be. और वो आपके अंदर ज़ाहिर है एक कि वो enthusiasm create करता है. प्लानिंग जो होती है वो आपके अंदर एक डेफिनेटली स्पिरिट को जगाता है और टू come up with new ideas कि हम कुछ achieve करें. So definitely planning works, but again at the same time we need to be consistent. Okay, so यहाँ एक और question है related to especially digital marketing roles. What do you या suggest to professionals or graduates कि फुल टाइम ऑप्शंस तो वो देखें जॉब के वाले से या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें लाइक referring to the times we are in और जो भी अब like the time we spent last year. So क्या उस पे एडवाइस करना चाहोगे? ओके. सो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे प्लस पॉइंट ये है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई बिलोंग टू दिस फील्ड, बट Mm-hmm. this is actually the fact, and I'm sure you will also agree with it, that this particular category, this particular field has most room when it comes to experimenting. Anybody can, write content, they can make strategies, they can make a post, they can create communication plans पूरे. क्योंकि डिजिटल पे आपके पास एक्सपेरिमेंट का सबसे ज्यादा रूम है. इफ यू वांट Yeah. टू एग्जीक्यूट एन आइडिया टीवीसी फॉर एग्जांपल, वो टीवी पे चले ना चले, वो अप्रूवल्स आए ना आए, द बजट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, वो अप्रूवल में अटक जाएगा, फिर वो शूट हो ना हो, फिर वो मॉडल्स अग्री करे ना करे, मतलब ऑल द थिंग्स दैट गो इनटू प्लानिंग व्हेन यू shooting a TVC. Um, when it comes to ATL branding, like above the line, print है, TVC है, the Right. larger scale marketing collaterals, वहाँ पे experiment आप कर सकते हैं, but approval में फंस जाते हैं. Digital में Yeah. ये है that you think of a status, you think of a nice copy, and you just share it with the brand. Right. और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोस्टली वो अप्रूव होके पोस्ट पे जा रहे होते हैं. Mm-hmm. बिकॉज डिजिटल में आज एक पोस्ट लगा, वो Mm-hmm. कल तक थोड़ा पुराना हो जाएगा, और वो एक हफ्ते बाद फिर एक नया पोस्ट आ जाएगा. Exactly. So Right. you keep learning, you'll keep experimenting, you'll keep seeing कि what worked, what did not work. Digital gives you a lot of room. Even like Yeah. somebody who has not done content writing can just start doing it. बेबी स्टेप्स ले, एक दो पोस्ट बनाए, देखे, शेयर करे इंस्टा पे, सॉरी फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, Right. एंड देखे क्या रिएक्शन आ रहे हैं. Okay. So Right. Right. Absolutely. the good point about this field is that this gives you a lot of room to experiment, and there's a lot of things that anybody can learn. Anybody over here with little bit of knowledge about digital marketing
know how about the platforms, how things work, how media is bought, how Mhm. planning strategy में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, 4-5 चीज़ें होती हैं, वो पता होनी चाहिए, वो अपडेट होती रहती हैं. Mhm. Um, इतना grasp आ जाए, so this has a lot of room. यहाँ पे मतलब people can come and try their lucks. And Right. another plus point is that कि this is a digital medium, you can do it from home also. Yeah. Like पिछले 6 महीने में I have worked with couple of companies, and उनमें से सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान में है, and the rest are either in Saudi or in UAE. Because they want remote plans कि यार हमें digital plans बना के दो, tell us what we should do, tell us how we should be promoting our campaign, our content, and that I've done from home literally. उनसे मैंने Skype पे, Zoom पे meetings करके I've taken the brief and I've worked in my isolation. I've worked with my own study, जो भी मैंने search किया, लोगों से बातचीत की. अच्छा, ये भी तब आया है when I've literally done my ragda in the field for 3 years. uh, my That's last job, जो yeah. मेरा exposure था with MNCs, with different people, different brand people, उनके अलग अलग mindsets, किस में मीडिया लगाना है, किस में मीडिया नहीं लगाना है, ये सब सीखा. और Nice. अब जाके मतलब with time, if you invest your time into it, then this will pay you off. And digital Mhm. is the future of marketing. तो आगे Mhm. जाके तो दिस इज गोइंग टू बिकम एसेंशियल. अभी भी Right. ब्रांड्स को इतनी नॉलेज नहीं है, दे लेट द एजेंसी डू द स्टफ कि यार आप कर लो, ये कैंपेन है, ये ब्रांड है, हमें हमें दिखा दो, हमसे अप्रूवल ले लो. बट आगे जाके ब्रांड मैनेजर्स विल आल्सो बी इक्विप्ड विद डिजिटल नॉलेज. Right. एंड वो भी फिर काउंटर क्वेश्चन कर रहे होंगे, अपने प्लान बना के खुद भी दे रहे होंगे कि यार इससे बेहतर है तो दिखाओ. So Mhm. this is going to be the future, talking about marketing and specifically digital marketing. Absolutely. Which is very great insight shared by you. Okay, so now a very important point of discussion we will highlight now about balancing your life and career. किस तरह से अपनी life को और career को balance कर रही हो? क्या इसमें ups and downs होते हैं? किस तरह manage कर रही हो? Because again, I feel um, we talk a lot of times about career development, career planning. कोई भी life planning या life strategies लाइफ Mm-hmm. को किस तरह बैलेंस करना है इसकी कोई लाइक हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं एंड आई बिलीव पर्सनली if you want to have a successful career first you need to understand the process of your life आपकी पर्सनल लाइफ कैसे जा रही है उसमें आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट है आपका होम मैनेजमेंट है आपका सेल्फ मैनेजमेंट है वो थोड़ा बेटर शेप में होगा या फॉर्म में होगा तब जाके यू कैन हैव अ गुड रिजल्ट्स इन योर करियर what do you think about it Absolutely, 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 you're absolutely right. And ये सब बातें practically अब पता चल रही है जब पिछले 1 साल से we are in a position to actually balance both the things. Balancing has become a little difficult because you are doing it from home, and hmm. things have become remote. Um, फिर घर पे distractions भी होती हैं and all the things. So basically, I personally think that this whole change, the whole dynamic, जो shift हुआ है, um, um, not on all companies, but majority they're working from home, and some people are working part time from home, part time from on ground. पिछले 1 साल ने हमें बहुत equip किया है to be able to balance um, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. पिछले 1 साल ने हमें बहुत सिखाया है. Yeah. None of us was ready, none of us was prepared with solutions कि यार ऐसे कर लेंगे, हमें पता ही नहीं था कैसे टाइम आने वाला है, and it just came Yeah. on our head. True. If you're talking about me, मेरा तो एग्जैक्टली मैटरनिटी का पूरा ब्रेक गुजरा है कोविड में. मेरा Mm. बेबी और उसके फौरन 4 दिन बाद was फर्स्ट लॉकडाउन आफ्टर द बर्थ ऑफ माई बेबी. उसके 4 दिन बाद हमारा पहला लॉकडाउन लगा है मार्च में. Yeah. So शुरू के महीने were tough as hell. Very 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 क्या कहते हैं, अनसर्टन चीज़ें और परेशानियाँ. और एट द बैक ऑफ माइंड में ये था कि यार ये तो चंद दिन में ठीक हो जाएगा, कोरोना वायरस चला जाएगा. बट ये तो रह ही गया है. 1 साल का Yeah. गुजर गया, पता नहीं चला, और आगे के सालों का भी कुछ आइडिया नहीं है. So the important watch out points are that prioritize. Number one, prioritize. जिस सोर्स से आपको अपना घर चलाने का एक जरिया है, इट्स गिविंग यू सम फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी सैलरी है आपका, फिर उसमें आपके बहुत सारे और गोल्स होते हैं, यू इन्वेस्ट, यू बाय, यू सेव. सो प्रायोरिटाइज कि आपको Okay. किस चीज़ को कितना टाइम देना है.
किस चीज़ में कितना एफर्ट लगाना है. Hmm. Are you ready for that? Because that particular goal is going to be super demanding. So उस मेंटल स्टेट में होना, उस प्रिपरेशन में होना, और जो हिकअप्स आते हैं बीच में, कोई चीज़ काम नहीं करी या उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा या हायरिंग फायरिंग चल रही है, कोई इस तरह का रीज़न है जहाँ पे डिमोटिवेशन आ रही है बीच में या लैक ऑफ एनर्जी आ रही है. सो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट Hmm. पार्ट ऑफ द स्ट्रगल. बैलेंसिंग करना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ की हैज़ बीन सुपर टफ फॉर मी, but I very happily and confidently say that today I'm able to manage both these things. Why? Because I have prioritized. I give my work that time जो जिस टाइम जो टाइम फ्रेम मेरा सुपर फ्री होता है. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी अगर होगी तो यू विल बी एबल टू फोकस मोर एंड प्रोड्यूस मोर रिजल्ट्स. एंड एट द सेम टाइम आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है तो आप ये भी देख रहे हो कि यार घर की 4-5 चीज़ें हैं वो सेट चल रही हैं ना, बिकॉज Right. यू प्रायोरिटाइज. इन माई केस आई हैव अ बेबी टू लुक आफ्टर 100% ऑल द टाइम 24/7 माशाल्लाह. बिल्कुल. सो उसका रूटीन मैनेज करना, एट द सेम टाइम अपना काम मैनेज करना जो मैं करती हूँ बाहर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए. I have also helped a small digital agency set up their own business so well, and मतलब they are a new digital agency and I'm helping them set up their functions and operations, and उनके clients अब बनने शुरू हो गए हैं, so slowly and gradually it will also be coming up, and I'm जितनी मेरी knowledge है I'm disseminating in them. सो Right. मेरा प्रायोरिटी सिर्फ ये रही है दैट आई नीड टू प्रायोरिटाइज, आई नीड टू हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम दैट इज गोइंग ऑन, वो चल रहा है, वहाँ मेरा काम चल रहा है जिससे मेरी फैमिली की बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, एंड Hmm. थिंग्स आई एम डूइंग एट होम, सेविंग, हेल्पिंग, सपोर्टिंग, whatever. So it's important to prioritize. I have also taken a very The long key break. is. Just by the way, मैंने 1 से 1.5 साल का ब्रेक लिया है कोविड से पहले वाला जो पूरा फेज था. दैट ब्रेक वाज एब्सोल्युटली पर्सनल, जो मैंने मैटरनिटी वाला बताया. बट उस ब्रेक में भी ना यू गेट टू नो दैट व्हाट आर योर प्रायोरिटीज. क्या है कि चार Exactly. पांच चीजें मेरी प्रायोरिटीज हैं और दे ड्राइव मी टू डू द स्ट्रगल दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. Yeah. Yeah. um, Absolutely. So give You see, yourself a break if you're, at a point, at a breaking point, at a struggling point. It's important to give yourself that importance, that worth, that time to breathe, relax, and then take a fresh start again. yeah. And know that what are your priorities, what two things you need to work on. They are your essentials. Hmm. Once you prioritize, you start getting a direction. ये बस nature है, this is the way things move. या Um, प्रोसेस है, इसको समझने की जरूरत है. इसको it's समझने की जरूरत है, रश नहीं करना. एंड आई वुड ऐड ओवर हियर कि फुल स्टॉप भी नहीं लगाना. कोई अगर ट्रबल्स आएंगे right. जो भी है, फुल स्टॉप नहीं लगाना. टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, एंड देन टेक योर एक्शन फर्दर कि अब करना क्या है. बिल्कुल ऐसा ही. आई थिंक Nothing is दैट विल smooth. अगेन हेल्प यू. बिल्कुल कुछ स्मूथ नहीं मिलेगा आपको लाइफ में, कुछ भी स्मूथ नहीं है, बट दैट्स नॉट व्हाई यू शुड बी वरीइंग और यू शुड बी स्टेपिंग बैक. एग्जैक्टली. वो है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, यू डोंट नो. अभी आप बाहर निकलो कि नहीं तो आपका अंदाजा कैसे होगा दैट व्हाट आर यू केपेबल ऑफ एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बाहर वेट कर रही हैं. इफ आमना मेरी तुमसे बातचीत नहीं होती आउट ऑफ नोवेयर, तो आई वाज मिसिंग आउट ऑन सम मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ. द द थिंग्स, द वे दैट यू हैव हेल्प्ड मी विद, द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव थ्रोन टुवर्ड्स मी. तो यू नीड, एग्जैक्टली. पहिया चलता रहना चाहिए जिंदगी का. एग्जैक्टली. प्रॉब्लम आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, नथिंग इज गोइंग टू बी स्मूथ, बट that drive, that motivation in you, that no, I need to do something and I want to be there, and the direction, that's super important and यही essential है. This is like दुनिया इसी चीज पे चलती है, that you need to keep yourself moving. Wow, this is so, good, admiration मैं कहूँगी कि ये इतनी admire कर रही हैं बातें, and I hope it will help our audience, whoever will listen, graduates, professionals. Okay, so इसी हवाले से एक हमारे पास comment है जो कि मैंने display किया हुआ है. अबीहा शेख हसन कह रहे हैं that we have so much admiration and respect for women who balance family and work. So ये recognition मिल रही है. Thank you very much for joining Thank us. you so much, Hassan. Thanks a lot, and thank you all other commenters also. Exactly. um Ideal would be कि ये ये चीज हर बंदी के साथ relevant हो. Every बंदी should say that
It's my work, my life. जो भी वो काम करे, XYZ, her choice. Nice. But मैं Exactly. करती हूँ, मैं करूँगी. Hmm. You know, इस तरह की सोच होनी चाहिए कि I'm It's doing it and spirit I'll do it. oriented. And like, So keep yeah, doing it. yeah, absolutely. अच्छा, वो सोच भी कोई खुद नहीं डालेगा, आपको एक्सप्लोर करनी है, क्रिएट करनी है, समझनी है. आई मीन वी कैन लर्न डेफिनेटली फ्रॉम आवर सराउंडिंग, रिसर्च कर सकते हैं, देयर आर टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गूगल पे. बट अगेन वो सोच है ना, वो अंदर से खुद से आई, क्रिएशन करनी है उसकी, एंड देन मूव फॉरवर्ड. You start अच्छा, prioritizing. You need to prioritize. वही वाली एग्जैक्टली. side बात. Okay. Okay. So now again, winding up our section with I must say, a tip from you कि लाइफ का कोई ऐसा फॉर्मूला बताना चाहती हो, और again advice on life, that लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे either we can be happy or we can find peace. Yeah, anything, coming from your inside about life, and then about career. कोई success tip हो, which can again work out for anyone, whoever will listen. So that is our main goal, to help and support community, to support people. आज अगर हमने कुछ learn किया तो हम कुछ, you know, आगे उसको carry forward करें. So what would you like to share with us? My top advice or a friendly advice would be that it's a request basically that everybody should prioritize their health. Give super importance to your health. Take care of yourself. Have a good diet. Have a good routine. Take super care of yourself in this time of crisis. अपना ख्याल रखें. Please रखें. Don't take this lightly. People are associated with you. You are associated with a lot of people. So give yourself that importance and अपने आप को keep yourself protected. Keep your health one of your priorities also. That's my first thing to say. मैंने plan किया था कि मैं ज़रूर बोलूँगी. Second is that कि honesty is super important. Um, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑफिस बॉस को जाके बोलते हैं कि बॉस मुझे पसंद नहीं है. I'm being honest with you. No, if you don't like the Absolutely. person, take an action. Take the appropriate action. If you don't want to work with them, him or her, जो भी है, या तो आप जाके उनसे कंफ्रंट करें, बात करें, ठीक है, टेक इट आउट, एक्सप्रेस करें, एंड बी रेडी टू बी बैश्ड, बी रेडी टू हर्ट सम टू listen to some hurtful things. um अच्छा. be ready to be strike back. But talk, have the absorbency in you. बात करें आप कि सर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है. I'm just giving a very stupid example, very simple example. कि इस तरह का हर्डल आ गया है कि मुझे मजा नहीं आ रहा जॉब में, तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढो. To start looking Okay. for Yeah. other jobs. Hmm. Start talking to your friends कि यार मेरी यहाँ करा दो, वहाँ करा दो, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो बता दो. Work towards it. Dips will always be there. um, but उसके फौरन बाद राइज भी आना है. There's always a day after the night. अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है. So हमेशा डिप्स से परेशान नहीं होना है. उन स्ट्रगल्स से परेशान नहीं होना है. ये मेरा आज का बहुत दफ़ा मैंने चीज़ को रिपीट किया है, बिकॉज लिटरली दिस इज कमिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज, एंड मेरी अपनी एक्सपीरियंस है ये, दैट टिप्स में मैं परेशान होती थी, गिव अप कर देती थी. आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू देन फील कि यार नहीं होगा मुझसे. Hmm. बट Hmm. कोई मोमेंट होता है जो आपको उठने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. दैट डिप इज योर ड्राइव टू गेट अप अगेन फ्रॉम द फ्लोर. वहाँ तो रहना ना हमेशा नीचे, ऊपर उठना है, कुछ Right. और करना है, 4-5 चीज़ें हैं, उन तक रीच करना है आपको. So always stand up when you think you're falling. There's no end to it. Opportunities are there. आपके एक टैप के दूरी पर आपकी सारी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज जस्ट अ फिंगर टैप अवे. So struggle is life. I mean, it's good, and it's going to inshallah pay you off eventually, because it has. Alhamdulillah. Absolutely. Wonderful, wonderful insights from you, Abiha. And thank you so much for sharing Thank you this so much. amazing time with me. Lovely to have you and see you. And thank you to the audience who were there with us, watching us, and they have shared their feedback and comments. So there is one nice compliment for us, and I shall take it. And Sheikh Hassan is saying, both of us are very energetic and passionate. Thank you. Thank you.
for Thank having you such kind words for us. very much for your kind support and your love uh, at our streaming. All right, guys. So thank you very much for being with us. I shall say good evening ahead of you, and do support this streaming and share this streaming and with your network so that they can get the benefit out of it. Any single word, phrase, or sentence or advice, if it can work for you. So that would be our achievements. So see you soon. Take care of yourself. Love us. Bye Thank bye. you. Take care. Allah Hafiz.